most Harappan sites were located in semi-arid regions with salt water. Examine why. 15 मार्क का था, बताओ कुछ रिसर्च किया इसके बारे में? ये मत बोलना चैट जीपीटी को बोल दिया था उसने आंसर बना के दे दिया, राइट? ऑल तो ज्यादातर लोगों ने वही किया होगा, मुझे पता है, बट क्या आइडिया लगा या सोचा ही नहीं इसके बारे में? नहीं सोचा इसके बारे में तो घर जाके क्या किया फिर, या रूम पे जाके क्या किया? जीएस, मैपिंग और रिवीजन और आंसर राइटिंग और बाकी खाना बनाना, कपड़े धुलना, पोछा लगाना, राइट? ये सब किया। अरे भाई, थिंग इज कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको अचानक से एग्जाम में मिल जाएं तो डू यू हैव द इनसाइट्स टू डील विद देम, या हर चीज मैं ही बताऊं फिर ही आप दिमाग लगाना शुरू करोगे? बिकॉज ऐसा तो है नहीं ना कि इस तरह की चीज नहीं होगी कि एग्जाम में एकदम नया नया वाला क्वेश्चन मिलेगा। दैट इज व्हाई आई हैड गिवन दिस एज अ चैलेंज कि यार खुद का थोड़ा रिसर्च करो। आई वाज थिंकिंग कि एटलीस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एटलीस्ट आस्क्ड चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी या फिर वो जो एंथ्रोपिक क्लाउड वगैरह है, किसी से कुछ तो पूछोगे, कोई इनसाइट्स तो लेके आओगे। हाँ, तो वहां तक पहुंच नहीं पाए। हाँ, अच्छा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस पोजीशन से पूछा गया है कि बेसिक अजम्पशन है कि ज्यादातर साइट्स ऐसे रीजन्स में है, सेमी एरिड या सॉल्ट वाटर वाले रीजन में। हमको बताना है कि क्यों ऐसा दिखता है। ठीक है, तो बताओ। You'll have to draw upon all the things that you learnt in the first chapter also, जो sources वाला chapter था। तो question is not simply about location or ecological adaptation, water conservation and management, technological improvement, but archaeological survivability, visibility, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ आर्कियोलॉजी, वो सारे आपको इनसाइट्स भी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तब आंसर मिलेगा। बताओ। एविडेंस ज्यादा सरवाइव करता है सेमी एरिड रीजन्स में, इस वजह से वो ज्यादा दिखता है। सेकेंडली भाई, जहाँ पे फ्लड प्लेन्स होंगे, अलूवियम हर साल नया डिपॉजिट हो रहा है, वहां पे आर्कियोलॉजिकल माउंट जो हैं डिस्टिंक्टली विजिबल होंगे या फिर बहुत नीचे दबे होंगे? बहुत नीचे दबे होंगे। सेमी एरिड जोन्स में वो ऊपर होंगे, आसानी से दिख जाते हैं, तो विजिबिलिटी बायस है। थर्डली भाई, have all the Harappan signs been mapped and extensively, you can say, excavated? नहीं, only a very minor proportion of all known Harappan sites have been extensively excavated. So therefore हमें कौन से एरियाज में एक्सकवेशंस करना ज्यादा आसान होगा? जो कि हेविली पॉपुलेटेड हैं, हाईली कल्टिवेटेड एरियाज हैं, या फिर जो सेमी एरिड सॉल्ट वाटर जोन्स वाले एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अभी भी कम है, एग्रीकल्चर की इंटेंसिटी अभी भी कम है, तो वहां पे तो देर आर सेवरल प्रैक्टिकल लिमिटेशन जिसकी वजह से ये इमेज हमको दिखती है। तो एक तो ये एंगल हो गया। Secondly, what explains the location of so many Harappan sites in such regions? उस समय का जो फिजियोग्राफी है, वाटर ड्रेनेज है, क्या वैसा ही फिजियोग्राफी, वाटर ड्रेनेज इस पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है आज? नहीं। वी नो बैक देन द घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम यूज्ड टू बी अ पेरिनियल रिवर सिस्टम, आज वो नहीं है। देयर इज आल्सो क्लियर एविडेंस ऑफ major shifting of river courses that must have taken place during those periods. Thirdly, जहां पे हमको सॉल्ट वाटर वाले रीजन्स दिख रहे हैं, कौन से एरियाज को बोल रहे हैं हम? सौराष्ट्र, कच्छ, ये वाले एरियाज, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सदर्न राजस्थान, ये वाले एरियाज। क्या यहाँ पे हमेशा से सॉल्ट वाटर इनंडेशन था? नहीं, वो तो आफ्टर द रिवर कोर्स से शिफ्टेड
तब वहां पे सॉल्ट वाटर का इनंडेशन होता है, राइट। फर्दर हमने क्या देखा है, दैट वाज हड़प्पन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट अपॉन ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर? सरफेस वाटर, तो वुड सॉल्ट वाटर हैव बीन अ मेजर फैक्टर? नहीं। फर्दर श्री रत्नाकर क्या बोलते हैं कि भाई ट्रेड वाज आल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटर। जहां पे रिसोर्सेज होंगे, मान लीजिए कि कॉपर चाहिए तो आपको राजस्थान में सेटलमेंट्स बनाने ही पड़ेंगे। मान लीजिए स्टोन क्वारीज चाहिए तो आपको गुजरात में सेटलमेंट्स बनाने ही पड़ेंगे। मान लीजिए ट्रेड रूट्स का एक्सेस चाहिए, वाटर का एक्सेस चाहिए, या फिर मरीन रूट्स का एक्सेस चाहिए, तो आपको माकरान कोस्ट के ऊपर रहना ही पड़ेगा, राइट। तो दोज फैक्टर्स आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, by semi-arid regions also offer certain advantages as compared to floodplains. किसमें? कि मिक्स्ड फार्मिंग को सपोर्ट कर सकते हैं एंड दे आर लेस प्रोन टू फ्लडिंग, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टेबलाइज हो सकता है ज्यादा। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जिसकी वजह से ये अपीयर होता है। तो हमें क्या अजम्पशन को यहाँ पे रिवाइज करना है कि सारे साइट्स सेमी एरिड और सॉल्ट वाटर रीजन्स में ही थे, राइट। दैट अजम्पशन नीड्स टू बी रिवाइज्ड थ्रू आवर आंसर, राइट। तो उसमें ये दो तरह के आप आर्गुमेंट्स होंगे, एक तो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड आर्गुमेंट्स एंड दूसरा द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड आर्गुमेंट्स देने होंगे। बुक एंड कैसे करना चाहिए आंसर को, हाउ टू बिगिन, हाउ टू एंड द आंसर, शुरुआत कैसे होनी चाहिए? भाई, is this the norm in large civilizations or does it appear to be an exception? It appears to be an exception। बड़ा सरप्राइजिंग है, पैराडॉक्सिकल है कि सूखे इलाके में, खारी पाने वाले इलाके में ज्यादातर सेटलमेंट्स मिल रहे हैं। वी नीड टू मेक सेंस ऑफ दिस, ठीक है। कैन दिस बी अ गुड इनफ बिगनिंग? तो द लोकेशन ऑफ मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स with in regions with poor agricultural potential seems सरप्राइजिंग, ठीक है। thus the location of these sites in semi-arid regions with salt water need to be or needs to be carefully examined। ठीक है, तो बताओ भाई, अब पहले हमें किसके बारे में बात करनी चाहिए, द लिमिट्स ऑफ आर्कियोलॉजी और अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन्स? व्हाट इज द अल्टीमेट पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक? कि जो हमें ये दिख रहा है, क्या एग्जैक्टली वैसा ही था, या फिर ये आर्कियोलॉजी के लिमिटेशंस की वजह से ऐसा दिख रहा है? आर्कियोलॉजी की लिमिटेशंस की वजह से ऐसा दिखता है। तो अब बताओ, नाउ दैट यू नो कि कंक्लूजन में हम क्या नोट स्ट्राइक करने वाले हैं, तो फिर बताइए, शुड वी टॉक अबाउट अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज ऑफ हड़प्पन्स और द लिमिट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन? लिमिट्स को बाद में करना चाहिए, तभी आप कंक्लूजन उसी नोट पे
कर पाओगे। ठीक है, तो पहले अडेप्टेशन strategies to semi-arid conditions and groundwater. Right? चलो बताओ, what were the different adaptation strategies or what made agriculture in these regions possible? Firstly, it is a wrong assumption कि उस समय का फिजियोग्राफी आज के फिजियोग्राफी जैसा था। तो shifting of river courses इसकी वजह से those regions which at one point of time were fertile and verdant became semi-arid and inundated with salt water. ठीक है, that is one thing. Secondly, semi-arid regions के कुछ agricultural advantages होते हैं. First of all, they are less prone to frequent flooding, which can stabilize agriculture. And secondly, mixed farming के लिए ज्यादा advantageous होते हैं. Advantages of semi-arid regions to mixed farming. इसके बारे में हम बात कर सकते हैं. Thirdly, हड़प्पन अपने एग्रीकल्चर के लिए किस चीज के ऊपर रिलाई करते थे? फ्लड इरिगेशन या फिर वेल इरिगेशन? फ्लड इरिगेशन के ऊपर रिलाई करते थे, तो ग्राउंड वाटर का मेजर रोल होगा? नहीं, तो रिलायंस ऑन surface water rather than ground water. Further, और बताओ भाई, location of Harappan cities, Harappan sites in such conditions, एक और फैक्टर क्या होगा उसके पीछे? Locational factors associated with trade and resource availability. हिस्टोरियंस अगर आपको साइट करने हैं, एसटी लैम्ब्रिक, वॉल्टर फेयर सर्विस, मॉर्टिमर व्हीलर, शिरीन रत्नागर, एटसेट्रा. क्या हर एक क्लेम के लिए किसी हिस्टोरियन को साइट करना जरूरी है? नहीं जरूरी है. ठीक है. फर्दर, while these historians, they made these kinds of assertions regarding the rise and decline of the Harappan civilization,
क्या केवल इन्हीं हिस्टोरियंस ने इसके बारे में बात करी है, or do many revisionist scholars also talk about the same things? Many revisionist scholars also talk about the same things, such as अमलानंद घोष, एम.आर. मुगल, रीता राइट एटसेट्रा। तो ये सब लोग भी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया ये वाला फ्रेमवर्क। दूसरा बताओ, द लिमिट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। और हड़प्पन साइट्स आर represented, or Harappan sites are represented or are distorted by archaeology. First of all, the practical limitations of field archaeology and archaeological excavation. Since a very minuscule proportion of all Harappan sites have been mapped and excavated, making general assumptions about the pattern of Harappan settlement is wrong. ठीक है, तो हमें पूरी पिक्चर अभी पता ही नहीं है, तो आधी अधूरी पिक्चर के साथ हम कैसे बोल सकते हैं कि ज्यादातर साइट्स ऐसे एरियाज में लोकेटेड थी? दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, सर्वाइवेबिलिटी। बायस कि arid semi arid regions are better suited to preservation of material remains, right? ह्यूमिड कंडीशंस में डिकम्पोजिशन इरोजन ज्यादा होगा। थर्डली, विजिबिलिटी बायस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर्स की वजह से जो आर्कियोलॉजिकल माउंट्स हैं वो ढक जाते हैं, लेकिन सेमी एरिड रिवर्स, सेमी एरिड रीजन्स में इस तरह का रिवरीन डिपोजिशन होता नहीं है, तो आर्कियोलॉजिकल माउंट्स रिमेन क्लोजर टू द सरफेस, इजीली विजिबल। तो जो ज्यादा विजिबल होगा वही पैटर्न हमको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, देन शुड कंक्लूड द आंसर। बताओ, किस नोट पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, these factors may have played a role in locating most Harappan sites in semi-arid regions with salt water. But the limits of archaeology must also be taken into account while making such generalizations. ठीक है, तो while technological innovation and ecological adaptation were important in enabling
Harappans to occupy regions with poor agrarian potential. Generic or general assumptions या फिर generalizations cannot be made. The limits of archaeological research must be taken into account before making any broad generalizations. समझ में आया इतना? So while Harappans definitely adapted to semi-arid conditions, diversification, drought resistance crops like millets grown in this region, dual subsistence base, ठीक है, self and semi-precious stones, see over millions of square kilometers and several sites have been found in semi-arid regions. नहीं तो यहाँ पे वो जो element of surprise है, that paradox, that should be visible in the introduction. तभी वो आपको एक अच्छा launch pad मिल पाएगा to dive into further investigation. ठीक है? You must highlight that paradox in the introduction. समझ में आया? तो इस बार तो मैंने बता दिया है, लेकिन अगली बार इस तरह का सवाल जो होमवर्क में मैं दूं, उसके पास आपके उसके लिए आपके पास अच्छे-अच्छे आइडियाज होने चाहिए, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन क्लास. ठीक है, आई एम गोइंग टू लीव इट टू यू. जब आप लोग खुद फिर करके आओगे तभी मैं डिस्कस करूंगा उसको. तो जो इस तरह का होमवर्क होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ जाए तो फिर आप क्या लिख के आओगे? वही टूटे फूटे दो तीन पॉइंट्स लिख करके आओगे, ओनली फ्रॉम वन एंगल, एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी इनडिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्सेज आंसर. वो जीएस लाइक क्वालिटी होगा उस आंसर का. यू डोंट वांट दैट. ये प्रॉपर अपना क्या बोलते हैं ऑप्शनल का आंसर लग रहा है ना, तो ये क्वालिटी होना चाहिए उसमें, एनालिटिकल होना चाहिए. ठीक है, राइट. मूविंग अलोंग, तो कल हमने हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में कुछ क्वेश्चंस कुछ चीजें देखी थी. नाउ वी आल्सो नीड टू टॉक अबाउट, ये क्या है सर? हाँ, कौन सा हैंड आउट है? ये इस क्लास का है नहीं सर. राइट. नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट हड़प्पन सोसाइटी एंड रिलीजन. तो फर्स्ट, सम व्यूज ऑन हड़प्पन सोसाइटी. तो बताओ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन लर्निंग अबाउट हड़प्पन सोसाइटी एंड रिलीजन? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं हम, देयरफॉर वी रिलाई ओनली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू हमें सोसाइटी के बारे में क्या दिख सकता है लेकिन क्या नहीं दिख पाता है. वी कैन आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स, हायरार्कीज, प्रैक्टिसेस, बट उनके पीछे जो मैकेनिज्म्स हैं
वो हम नहीं समझ सकते कि व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरिंग सोशल कोहेजन, राइट? दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो कल्चरल लेंस के थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप्स हड़प्पन अपने कैरी आउट करते थे, दैट वी कैन नॉट हैव एक्सेस टू। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, ड्यू टू the undeciphered character of the Harappan script, our understanding of Harappan society remains limited. While archaeology can reveal social structures and hierarchies, social values, ideologies, outlooks, and uh, ethics remain hidden। ठीक है? हाँ। Now, despite this, based on archaeology, we do know some things about Harappan society। तो क्या पता लगता है हमें? It was hierarchically organized, it was diversified, different groups existed within the society. At the same time, there was relative egalitarianism। ठीक है? Despite this, we know that Harappan society was complex and stratified, yet relatively egalitarian। How do we know that it was complex, stratified? सेटलमेंट आर्कियोलॉजी के बेसिस पर, ग्रेव गुड्स के असेंबलेज के बेसिस पर, उसके कंपैरिजन के बेसिस पर। तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ सेटलमेंट आर्कियोलॉजी, अर्बन मॉर्फोलॉजी, comparative study of house sizes and funerary objects
we can say that the Harappan society was highly diversified and social hierarchies existed. Which groups constituted the upper strata of society? Merchants, guild leaders, ritual specialists, uh, ये क्या बोलते हैं, artisanal communities, they constituted the upper crust of society. Guild heads, rich merchants, ritual specialists, and large landowners constituted the upper crust of one society. On the other hand, urban labor, construction workers, petty craftsmen, and ordinary peasants occupied the lower strata of society. Petty craftsmen, construction workers, ordinary peasants, and uh, small shopkeepers or hawkers occupied the lower strata of society. तो हमें ये दिख तो जाता है, but can we say for sure what the mechanism to regulate the social relationship between these groups was? Was there any caste system? Was there any concept of ritual purity, etc.? ये सब हमें पता लग पाएगा? नहीं पता लग पाएगा. So, however, we can't say how relations between these groups were regulated. आगे लिखो. Questions of caste, lineage, kinship, ritual purity, etc. remain unanswered.
ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी तो एड्रेस कर दिया है, बट इट वाज आल्सो रिलेटिवली egalitarian. तो किस बेसिस पे बोल सकते हैं इट वाज रिलेटिवली egalitarian? एट द सेम टाइम द Harappan society seems relatively egalitarian in relation to, when compare against other Bronze Age societies, Mesopotamia, ancient Egypt, etc. When compared against Mesopotamia or Egypt. Does archaeology offer some identifiable indicators of this equality? क्या? Yeah, widespread use of burned bricks both for elite and common structures. Then, instead of royal private monuments, what do we see? Public structures dominating the urban landscape. Widespread use of script is also considered to be another indicator of large scale equality. ठीक है, तो bricks, burnt bricks, public structures, a public infrastructure, along with widespread use of script. समझ में आया इतना? तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन. कॉम्प्लेक्स, स्ट्रैटिफाइड, हायरार्किकल, येट रिलेटिवली egalitarian. और क्या एस्पेक्ट्स हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह का सिविलाइजेशन था? An urban civilization with extensive trading contacts. तो शहरों का कल्चर कैसा होना चाहिए, वहां पे लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए? शुड दे बी क्लोज माइंडेड, नैरो माइंडेड, अनएक्सेप्टिंग ऑफ आउटसाइडर्स, या फिर ओपन माइंडेड सोशल इथॉस रहा होगा? ओपन माइंडेड सोशल इथॉस रहा होगा, गिविंग द सोसाइटी अ ब्रॉड बेस्ड, प्लूरलिस्टिक एंड कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर. Social dynamic was broad based, diverse, and cosmopolitan. Now, यहाँ पे हम इसको how do we bring this point across? क्या बोलेंगे? That Harappan cities acted as melting pots for diverse ethnicities, influences, traditions, and ideologies. So, Harappan cities acted as melting pots for diverse ethnicities, influences, traditions, and ideologies.
And based on the archaeological record, does the Harappan society team seem to be a society in conflict with itself or a society which was largely at ease? It was largely at ease. ठीक है? It appears that the society was largely at ease with itself. What does this indicate? An open social attitude or an insular social attitude? This indicates an open social attitude rather than insularity. So, was the Harappan society rigid or was it adaptable and flexible? Was adaptable and flexible. So, the society was flexible and adapted to various impulses or influences, giving it what type of a character? An exclusivist character or an assimilative character? Giving it an assimilative character. Now, in such a society, for peace to prevail, एक necessary precondition क्या होगा? That based on identity आपका social rank decide होना चाहिए, आपको economic opportunities मिलनी चाहिए, आपको material access मिलना चाहिए, या फिर on the basis of capability सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए. सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए. Now, although we cannot say this for sure, but archaeology से ये reflect तो होता है ना. Thus, it appears that the Harappan social attitudes were shaped by merit and utility rather than identity. Mobility was perhaps, or high social mobility was perhaps one of its chief characteristics. ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ द सोसाइटी कि ब्रॉड बेस्ड ओपन सोसाइटी था रादर देन एन इंसुलर क्लोज सोसाइटी. इंक्लूसिव असिमिलेटिव सोसाइटी था रादर देन एन इंसुलर सोसाइटी. ठीक है, एंड मेरिट बेस्ड सोसाइटी था. फर्दर, one question when we study society, especially in the Indian context, is the status of women. ठीक है, तो
स्टेटस ऑफ women in the हड़प्पन सोसाइटी, बताओ। Based on frequent representations of the mother goddess, artistic representations of women such as the dancing girl indicates what? That women को डेफाई करना काफी नॉर्मल था, एंड ऑल्सो दैट women enjoyed visible roles in society। ठीक है, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं दैट दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई सोशल स्टेटस ऑफ women? विद सर्टेनिटी बोला जा सकता है? नहीं। इवन ड्यूरिंग द medieval period शक्ति कल्ट वाज फ्लरिशिंग, बट women को डेफाई करके उनको एक पेडेस्टल पे रख दिया गया, एंड वुमनहुड इटसेल्फ वाज सैक्रिलाइज्ड। यानी कि women के ऊपर रिलीजियस एंगल से रिस्ट्रिक्शंस अब कम हो जाएंगे, दैट द गॉडेस शुड बी एबल टू डू व्हाटएवर शी वांट्स, और दैट द गॉडेस मस्ट बिहेव लाइक अ गॉडेस, बी कंप्लीटली प्रॉपर। तो उसको बाइंड कर दिया गया डेइफाई करके। नाउ दो कॉन्ट्रास्टिंग इंटरप्रिटेशंस हैं sim, 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 same type of evidence के, right? Therefore we cannot say for certain. What we can say for certain is that women definitely had visible roles in society। अच्छा, जॉन मार्शल ने डांसिंग गर्ल को किससे एसोसिएट किया? विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। लेकिन रिविजनिस्ट स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? दैट इज अ स्टेप टू फार। भाई, we are simply saying that women were occupying the positions of entertainers. They were practitioners of music and dance. They had visible roles in the society. तो एक जोड़ता है विमेन डांसिंग गर्ल को विमेन के कल्चरल कंट्रीब्यूशन से, दूसरा जोड़ा है प्रोस्टिट्यूशन से। अब बोथ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, बट वी कैन नॉट से फॉर श्योर। ठीक है, हाँ। frequent representations of women as divine symbols such as the mother goddess, prompted early scholars like John Marshall to insist that women enjoyed high status and freedom in the Harappan society. Conversely, his comparison of the dancing girl of Mohenjo-daro with the Nach girls of British India was seen as or was presented as proof of prostitution। ठीक है,
Later scholarship advises caution. Firstly, the deification of women is not always an indicator of female agency. In fact, deification may be used to restrict women's agency. ठीक है? That is one thing. Secondly, the association of the dancing girl with prostitution is what? Actual fact or pure speculation? Pure speculation. In fact, उसका नाम इसने dancing girl रख दिया, therefore the association with prostitution comes about. ठीक है? Is speculative. ठीक है? तो हमें ये तो नहीं पता कि विमेन का स्टेटस हायर था या लोअर था, बट क्या पता है artistic representation of women was acceptable to the society and women enjoyed visible roles in society. ऐसा नहीं है कि पर्दे में ढाप के रखा जाता था women को. ठीक है? Thus we can conclude that women had visible roles in the society and their artistic representation was permissible. हम केवल इतना बोल सकते हैं. Further, one other aspect of the social dynamic was its apparent peace and stability. ठीक है? So the Harappan society appears to be a peaceful, stable and well integrated society. तो किस बेसिस पे बोल पा रहे हैं हम? एक तो the longevity of the Harappan civilization indicates that it did not suffer major social disruptions such as riots, class conflicts, etc. That is one thing. Secondly, यहाँ पे although religious diversity, ideological diversity था, diversity did not result in division and conflict. Once again उसके legitimacy के सॉरी उसके longevity के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, relative prosperity के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है. Thirdly, the elites, did they like to greedily hold on to their wealth, or were there distributive mechanisms present within the society in order to mitigate social conflicts? Mitigation के लिए हमको
रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म्स दिख जाते हैं कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर फोकस है। तो दिस सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक एंड इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स। डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट, इसको मैनेज करने के लिए सेफ्टी वाल्व सोसाइटी ने इवॉल्व कर रखे थे। एक तो ये बात हो गई। बट रिविजनिस्ट स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? दैट एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट प्रूफ ऑफ एब्सेंस। ठीक है, हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर फेरोनिक सिविलाइजेशन, फेरोनिक इजिप्ट में कॉन्फ्लिक्ट के इंस्टेंसेस किसके थ्रू दिखते हैं? डू वी लुक फॉर देम थ्रू अर्बन मॉर्फोलॉजी और प्राइमरीली इन लिटरेचर? लिटरेचर में दिखते हैं भाई। वहां पे जो तख्त या ताबूत होता है फारोज का, उसमें एक एपिटाफ लिखा होता है कि अपने इस साल ऑफ रेन में इसने इनका रिबेलियन क्रश किया, राइट, इस एरिया को ओवररन किया। तो वहां से मिलता है हमको। यहाँ पे दिखता है ये सब? नहीं दिख पाता है क्योंकि लिटरेरी एक्सेस हमको है नहीं। स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, जनरल ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेट होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा? कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। Inherent in that organization is a particular rank based on unequal distribution, unequal control over resources. ठीक है, that the Harappan society created mechanisms to distribute wealth. Was it a natural choice or do you think it was a forced choice? Based on the pattern of human behavior तो ये लगता है forced choice था, लेकिन we cannot say for sure। ठीक है, तो हो सकता है कोई राइट्स हुए हों, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई एथनिक डिवाइड हुआ हो, जिसके बाद ये रिडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म्स बनाए गए हों, एंड दैट बिकेम द नॉर्म। तो ये अर्ली नॉर्म था या लेटर नॉर्म है, दैट वी आर अनसर्टेन अबाउट। ठीक है, तो द हड़प्पन सोसाइटी appears to be uniquely at ease with itself. Despite ethnic, cultural, religious, and ideological differences, it seems that Harappans established mechanisms to ensure that differences do not become divisions leading to conflict. Redistribution and redistribution, social mobility, and ideological cohesion
defined the social dynamic rather than what? Concentration, restriction, and identitarian divide. Okay? And it is this dynamic rather than this dynamic what made the Harappan civilization unique, what made the Harappan society unique. And as a result of this, such a long period of stability could sustain. Okay? This made the Harappan society unique and explains the longevity and stability of the Harappan civilization. The absence of major disruptions resulted in sustained progress and prosperity. ठीक है? अ, ये तो एक साइड हो गया. On the other hand, revisionists question this characterization. क्या बोलते हैं? दो चीजें. First of all, is archaeology the most suitable source to learn about instances of social disruption and conflict, or is literature better suited? Literature is better suited. Archaeology is poorly suited to reveal social conflicts and disruptions. The second thing they point out, क्या? That जो ये redistributive mechanisms exist कर रहे हैं, were they based on free choice or were they forced? They may have been forced. They were perhaps forced rather than the free choice of the Harappan elites. Further, the redistributive and
accommodative, characteristics of Harappan society may have emerged as responses to social strife and were not necessarily endemic features of the Harappan social dynamic. ठीक है, तो बताओ कंक्लूड कैसे किया जाए इसको? ऑन द होल डॉट डॉट डॉट, बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स करिए, सम अप करना हो अगर एक दो सेंटेंस में. ऑन द होल the Harappan society appears to have some completely unique characteristics, a unique social dynamic. But ये जो uniqueness है, is it firmly established or is it only apparent? Apparent है. असलियत क्या है हमें पता नहीं लग सकता. कब तक? जब तक स्क्रिप्ट डिसाइफर ना हो जाए. ठीक है. ऑन द होल the Harappan society appears to have operated on principles that were completely different from the historical norm resulting in prosperity, peace, stability, and longevity. But यहाँ पे critical word क्या है? It appears to be so. ठीक है. However, due to the limitations of archaeological dependence, these interpretations remain speculative, and firm conclusions can be drawn only when the script is deciphered. ठीक है. तो इस नोट पे हम इसको सम अप कर सकते हैं. अब लॉजिकली नेक्स्ट क्या आना चाहिए? हाँ,
रिलीजन नहीं, उसके पहले क्वेश्चन आना चाहिए, राइट, जो आप लोगों को लिखना है। क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ हड़प्पन सोसाइटी। हाउ was it able to mitigate social conflicts and maintain stability? कितने नंबर में लिखोगे? 15 या 20? हर बार 15 ही देता हूं, इस बार 20 मार्कर। बताओ, आंसर लिखने के लिए मिर्च मसाला है अप्रोप्रिएट? ओनली थिंग इज गोइंग टू बी फ्रेमिंग कैसे करनी है। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू थिंक ऑफ समथिंग। तो आज के डैम्प के लिए, मतलब आंसर सबमिशन के लिए, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलें। अब इसके बाद क्या करना है? सोसाइटी कर लिया, अब रिलीजन करना है। तो बताओ, based on the available evidence, highlight the chief characteristics of Harappan religion. ठीक है, nature worship, animism were visible characteristics of Harappan religion. और the presence of fertility cults, right? तो fertility symbols का worship हो रहा है, सांप की पूजा हो रही है, बुल की पूजा हो रही है, लिंगा एंड यूनि वर्शिप, मदर गॉडेस के सिंबल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वेनरेट किया जा रहा है। What does this all reflect? Was the religion highly philosophical in nature or primarily utilitarian, materialistic in nature? Materialistic foundations थे इसके। तो फर्दर और बताओ। Belief in afterlife that is apparent from the diverse assemblage of grave goods. Further, burial was done in a ritualized manner. ऐसे नहीं है कि haphazard मैनर में डेड बॉडीज को सेट असाइड कर दिया जाएगा, राइट? तो बिलीफ इन द आफ्टर लाइफ एंड रिचुअलाइज्ड बेरियल। फर्दर और क्या दिखता है हमें? Was religion a public thing or a private thing? It was practiced publicly but not enforced from above. तो यानी कि यहाँ पे आपको कोई बड़े रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, श्राइन्स, टेम्पल्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या मिलता है देखने के लिए?
घरों के अंदर मार्केट स्क्वायर्स में छोटे छोटे श्राइन्स बने होंगे जहां पे ऑर्डिनरी पीपल वुड ऑफर अप सैक्रिफाइसेस। ठीक है, चाहे उनके घर में बने हुए वोटिव टैंक्स के अंदर, डोनेटिव टैंक्स के अंदर छोटा सा सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा, और मे बी ऑफरिंग्स ऑफ फूड, फ्रूट, प्रसादम एटसेट्रा वुड बी मेड टू स्मॉल पब्लिकली मैनेज श्राइन्स इन ओपन स्पेसेस। ठीक है, उस तरह से दिखेगा। तो एब्सेंस ऑफ स्टेट रिलीजन, प्राइवेट नेचर ऑफ रिलीजियस वर्शिप, ये देखने के लिए मिलता है। और बताओ, और क्या दिखता है? डू वी सी रिलीजियस होमोजेनिटी और डाइवर्सिटी? रिलीजियस डाइवर्सिटी। एंड ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, डिड इट लीड टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और डिड रिलीजियस हार्मनी प्रिवेल? रिलीजियस हार्मनी प्रिवेल एंड प्लूरलिज्म प्रिवेल कर रहा था। ठीक है, नाउ ये तो वो हो गया जो हर कोई लिख के आएगा। आप अलग क्या लिख के आओगे? विमेन वर्शिप, अच्छा, यही बस अलग लिख के आओगे? अच्छा, विमेन वेनरेशन ऑफ द फेमिनिन फॉर्म, वो फर्टिलिटी कल्ट के साथ यहाँ पे आप लिख सकते हो मटेरियलिस्टिक एंड यूटिलिटेरियन कैरेक्टर में। अलग क्या लिख के आओगे? देखो, सोसाइटी की स्टडी में भी सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? एक्सक्लूसिव डिपेंडेंस ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। यहाँ पे भी वही है सबसे बड़ा लिमिटेशन टू अंडरस्टैंड द ट्रू कैरेक्टर ऑफ हड़प्पन रिलीजन। तो बताओ, व्हाट काइंड ऑफ लिमिटेशन डज एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन आर्कियोलॉजी प्रेजेंट? आई नो, मैंने किसी एक क्लास में आपको बताया था रिलीजन के प्राइमरली दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, दूसरा परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट, रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजी के थ्रू क्या दिखता है? द परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट, रिचुअल्स दिखते हैं। फिलॉसफी दिखता है? नहीं दिख पाता है। तो एनी आइडियाज अबाउट हड़प्पन फिलॉसफी, even the assertion that it was materialistic in content, it was not philosophical, metaphysics के important questions नहीं raise होते थे, there was no deep exploration about the relationship between man and God, the nature of the universe, the idea of life after death, what it actually means, salvation क्या एक objective था religious pursuit का या नहीं था? Do these are these questions, can these questions be answered completely by archaeology alone? नहीं, इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस अपीयर होते हैं। एक साइड पे तो हम बोल रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक बेंट था रिलीजन का, रिलीजियस आइडियोलॉजी का, इट वाज प्रैक्टिकल इन नेचर, यूटिलिटेरियन इन नेचर, और दूसरी साइड क्या बोल रहे हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ वाज क्लियरली विजिबल। तो भाई, अगर केवल यूटिलिटेरियन है तो वो तो मटेरियल वर्ल्ड में बेस्ड होना चाहिए ना रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। व्हाई वुड इट बी कंसर्न्ड अबाउट द आफ्टर वर्ल्ड, आफ्टर लाइफ? तो these kinds of contradictions start to appear, and ये contradictions कब तक रिजॉल्व नहीं हो सकते? जब तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ लेते। तो वो स्टैंडर्ड लाइन आप इस तरह के हर डिबेट में चिपका सकते हो, बट द थिंग इज यू शुड हैव दिस अवेयरनेस कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, नन ऑफ इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट।
all of it is historical speculation and thus heavily debated. ठीक है, तो कोई फाइनल वर्ड नहीं अपीयर हो पाया है इसमें. This is what you are going to write apart from what everybody else writes. ठीक है, खुद लिखोगे या मैं लिखवाऊं? लिख लोगे पक्का? ठीक है, तो I'll just indicate over here that इसका आपको क्रिटिक भी करना है. Yeah, what does utilitarian character mean in the context of religion? कि रिलीजन का एक पर्टिकुलर यूटिलिटी है कि मैं भगवान जी की पूजा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अच्छी फसलें दें, जो मेरे घर में क्या बोलते हैं एनिमल्स बंधे हुए हैं उनके हेल्दी प्रोजनी हो, खूब सारा मीट डिराइव हो, खूब सारा मिल्क डिराइव हो, सो दैट मोर वर्कर्स कैन वर्क ऑन माय फील्ड्स, मुझे ज्यादा बच्चे हों. तो आप भगवान को एक्चुअली किसके लिए प्रे कर रहे हो? व्हाई आर यू वेनरेटिंग गॉड और नेचर और वॉट एवर सुपीरियर बीइंग? सो दैट यू गेट समथिंग इन रिटर्न. तो एक हाथ दो दूसरे हाथ लो. दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इज द हॉलमार्क ऑफ अ मटीरियलिस्टिक रिलीजन. ठीक है, आप लोग भी एग्जाम के पहले जल्दी जल्दी, वेदर पूरे साल आपने एक भी बार पूजा करी हो कि नहीं करी हो, बट जल्दी जल्दी करने लगते हो ना, राइट? एंड ये भी नहीं कि केवल अपने भगवान को, ये भी कर लेते हो, ये भी कर लेते हो, वॉट एवर यू सी, सब कुछ चल जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? तो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ मटीरियलिस्टिक फेथ. फिलोसॉफिकल फेथ क्या होगा? उसका प्राइमरी ऑब्सेशन क्या होता है? मोक्ष, मुक्ति, salvation, nirvan, right? That is the primary obsession. And for that, what kind of questions become important? Do real world questions become more important or do other world questions become more important? अहलौकिक या परलौकिक सवाल? परलौकिक सवाल. तो यानी कि भगवान क्या है? Who is God? What can he do? What has he done? How does he influence me and my surroundings? If God creates adverse situations for me, what does it mean? Is he punishing me or is he simply testing my faith? Right? These kinds of questions then start becoming important. जब हम यूटिलिटेरियन लेंस के थ्रू रिलीजन को देख रहे हैं तो सारे के सारे डिस्कशंस इसी गोले के ऊपर होने वाले हैं. दूसरा गोला कोई मतलब नहीं है, राइट? तो दैट इज द आइडिया. उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन या मटेरियलिस्टिक रिलीजन. ठीक है. Smita is saying, sir, how can we say that there was an absence of state religion when we have not deciphered the script? Because based on archaeology, हमें वो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखते हैं जो कि स्टेट रिलीजन के साथ यूजुअली एसोसिएट होते हैं. ठीक है, क्या है वो? रॉयल टेम्पल्स, श्राइन्स, ह्यूज मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, वो सारी चीजें नहीं दिखती हैं. बट यस, द क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड दैट स्टिल रिमेन्स वैलिड कि भाई once again the same thing, that absence of evidence is not proof of absence. ठीक है, हो सकता है कि किसी चीज का एविडेंस हमको ना मिल पा रहा हो, बट कैन वी से फॉर श्योर कि बिकॉज ऑफ दैट वी कैन प्रूव दैट दैट फिनोमिनन वाज कंप्लीटली एब्सेंट? वो नहीं हो पाता. दैट इज व्हाई दिस क्रिटिक, ये आपको खुद करना है. ठीक है, understood. Is the gist of the critique that archaeological evidence can only provide information about the performative aspect of religion? Philosophical aspect cannot be inferred, such as relationship between man and God. Yes. Thus, nature of the Harappan religion cannot be fully inferred until script is deciphered. Yes. And on the other hand, जो अभी स्मिता ने highlight किया कि भाई the specific, you can say, assertions made by historians based on archaeology that absence of state religion, उसके बारे में हमें सर्टेनिटी नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब हम ये अज्यूम कर लें कि वो था ही नहीं. That may be a step too far and modern historians have started to ask these new questions. Clear? Now,
एक और सवाल आ जाएगा अब, क्या? critically examine the characteristics of Harappan religion. 15 marks. अब जो सोसाइटी वाला क्वेश्चन था वो तो सबमिशन के लिए है, ये खुद लिखने के लिए है, ठीक है? आगे चलें। Now, Harappan economy, society, religion, etc. we have talked about. The next important topic, Harappan art and architecture. लेकिन ये जो हेडिंग है ना थोड़ा मिसलीडिंग है. We don't simply need to identify and talk about the detailed features of various types of Harappan art and architecture. एक डिबेट को भी हमें एड्रेस करना है. क्या? Whether Harappans had any sense of artistry or not. Aesthetic sense था उनके पास या ऐसे ही लल्लू थे, right? So that is the question that we need to address. So three things primarily. First, did Harappans lack a sense of artistry? Or did Harappans lack an aesthetic sense? That is one question. Secondly, different types of Harappan art and उनके features. Thirdly, types and features of Harappan architecture. These are primarily the things that we are interested in. So, first thing, did Harappans lack a sense of artistry? Sense of art था या नहीं था? था. क्वेश्चन आएगा तो यही लिख के आगे बढ़ जाओगे कि did Harappans lack a sense of artistry? No. राइट? 3 पेज पन्ने खाली छोड़े, आगे बढ़ गए. ऐसे नहीं हो सकता ना. तो first we need to address the debate, did Harappans lack a sense of artistry? Among the early archaeologists to unearth and study the Harappan civilization, सबसे influential नाम कौन है? John Marshall. Back then, he was the Director General of the Archaeological Survey of India, and he was one of the early archaeologists to study the artifacts emerging out of Mohenjo-daro, Harappa, these kinds of places. Okay. Now, John Marshall was among the most influential early archaeologists to study the
Harappan Civilization. He characterized life in Harappan towns as what? Comfortable but joyless. Okay. And why was it joyless? Because the Harappan outlook towards life किस तरह का appear होता है? Was it artistic or was it utilitarian? It was utilitarian. According to him, the utilitarian obsession of ancient Harappans deprived them of any artistic sense or aesthetic sophistication. Which observations were these assertions based on? इसने हड़प्पा को किसके अगेंस्ट कंपेयर किया? Against ancient Greece, Mesopotamia, Egypt, Persia, right? इनके अगेंस्ट कंपेयर किया. And what did he highlight? The conspicuous absence of monumental art. ठीक है? Monumental artistic projects such as the Great Pyramids, ziggurats of Mesopotamia, the tombs of Persia, the palaces of Greece, meeting squares, town halls of Greece, etc. वो सब यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है. ठीक है? Now, ancient Harappa conspicuously lacked the monumental art of other Bronze Age civilizations such as the pyramids of Egypt, the ziggurats of Mesopotamia, the necropoli
necropolis of Persia or the colonnaded temples of ancient Greece. ठीक है, ये अगर नहीं पता है क्या क्या होते हैं तो गूगल पे सिंपल सर्च करोगे, सब पता लग जाएगा। ठीक है, पिरामिड्स आई एम श्योर सबने देखा होगा। जिगुरैट क्या होता है? पिरामिड विद इट्स टॉप हैक्ड ऑफ, तो यानी कि उसका टॉप फ्लैट होता है, राइट। नेक्रोपोलाई क्या होता है? नेक्रो मतलब डेड, पोलिस का मतलब सिटी, the city of the dead. These were monumental burial complexes dedicated to ancient Persian god kings. ठीक है, तो उनके किंग्स केवल किंग्स नहीं होते थे, गॉड किंग्स हुआ करते थे। एंड कॉलोनेडेड टेम्पल्स, कॉलोनेडेड मतलब जो रूफ है दैट इज सपोर्टेड बाय अ सीरीज ऑफ आइडेंटिकल कॉलम्स, कॉलोनेड है, राइट। तो उस तरह के टेम्पल्स बनाए गए हैं, सच एज पार्थेनॉन एंड एथेंस, राइट। तो उस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, what was the other assumption that he had made about Harappa? That it was ruled by a highly centralized, despotic, monarchical priest king, much like the other Bronze Age civilizations. And इस तरह के रूलर्स ने वहां पे इस तरह का मॉन्यूमेंटल आर्ट बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीस्ट किंग था, he did not make any such art because he did not know how to make any such art. ठीक है, तो the absence of such monumental art was presented as proof of artistic limitation. कि वो आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस ही नहीं थी, इस वजह से इस तरह के मॉन्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं हमको। समझ में आया? व्हाट इज द काउंटर आर्ग्यूमेंट? और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सबसे पहला कि भाई कोई प्रीस्ट किंग था ही नहीं तो रॉयल मॉन्यूमेंट्स मिल ही नहीं सकते। ये खुद ही बेवकूफ था कि इसने बोला कि मोहनजोदारो हड़प्पा, दीज वर द ट्विन कैपिटल्स फ्रॉम वेयर प्रीस्ट किंग्स यूज्ड टू रूल अ हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, this assumption is based on the highly centralized priest king model of governance जिसको ज्यादातर हिस्टोरियंस एक्सेप्ट करते हैं और ज्यादातर रिजेक्ट कर चुके हैं, which has been discarded by
most modern scholars, and hence, what explains the absence of royal monumental art? Was it a result of artistic limitation, or was it an outcome of the different political structure that existed in Harappa? Different political structure. The absence of royal art is thus is thus not a result of artistic limitation, but a result of एब्सेंस ऑफ रॉयल्स। ठीक है, तो रॉयल आर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिस्टिक इक्विपमेंट नहीं था या फिर नो हाउ नहीं था, रॉयल्स ही नहीं थे तो रॉयल आर्ट का कोई सवाल ही नहीं होता है, बट रिजल्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ रॉयल्स। एक पॉइंट ये हुआ, समझ में आया? सेकेंडली, if the ruling class was not controlling art, who was controlling art? Art was a public thing, ordinary people were controlling art। ठीक है, तो as a result, art was a public thing, shaped, produced and controlled by the ordinary people। So what would be the character of art in such a case? Would Harappans produce monumental art or miniature forms? Miniature forms. Thus, art was produced in miniature forms। और क्या कैरेक्टर होगा आर्ट का? Would it be a separate, you can say, ornamental form of art, or would it be situated within the context of the daily experience and utilitarian होगा? यूटिलिटेरियन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि डेली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होगा। Thus, art was produced in miniature forms and located within the context of daily experiences तो would art appear to be
a distinct phenomenon of the Harappan life, or would it be integrated into the daily experience? It would be integrated into the daily experience. Thus, art was not expressed in isolation. Rather, it was integrated within the daily experience. Further, अब क्योंकि पब्लिक कंट्रोल है ओवर आर्ट, तो इज आर्ट गोइंग टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, or will it exist on the intersection between standardization and diversity? So in some sense it is going to be standardized, but in various other senses it is going to be diversified also. For example, इवन इन टाउन प्लानिंग एक आर्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है, बट विल द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली एवरीवेयर, और आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग going to shift in response to the ecological realities? They will shift in response to ecological realities. पेंटेड पॉटरी हो जाए, सील्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ह्यूमन एनिमल फिगर्स, गॉड लाइक डेटीज हो जाए, यूज ऑफ द स्क्रिप्ट हो जाए, दीज आर विजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ हरप्पन आर्ट, राइट? तो हर जगह पे पेंटेड पॉटरी मिल रहा है, सील्स मिल रहे हैं, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर विजिबल. बट एट अ लोअर लेवल, अगर आप रीजनल एनालिसिस करो हरप्पन पॉटरी का, व्हाट आर यू गोइंग टू फाइंड? Are you going to find the same assemblage of pictographic script, the same assemblage of gods and goddesses, animal figures, human figures, या फिर डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है? डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, राइट? एंड आर्ट वाज प्रैक्टिकली इन्फॉर्म्ड, ठीक है? तो हर जगह का आर्ट उसके रीजनल कॉन्टेक्स्ट से इन्फॉर्म होगा. हरप्पन आर्ट was not uniformly standardized. Since no elites or elite groups were disseminating a particular artistic sense. Rather, it was diverse, practical. It was diverse and practical. It was diverse and practical. Shaped by local traditions and needs. At the same time, what do we find? Uniformity that is imposed from above, or uniformity that comes from below. Uniformity that comes from below.
due to ideological exchange, due to trade based interactions, due to cultural assimilation and dissemination, what will ultimately happen? These regional local art forms start showing some signs of uniformity. Okay? At the same time, due to the bottom up nature of cultural integration, based on trade, religion, and assimilation, Harappan art assumed some standardized forms, such as, बताओ क्या क्या? अरे, ब्रॉन्ज एंड कॉपर स्कल्पचर्स, स्टोन स्कल्पचर्स, स्टेटाइट सील्स, स्टोन एंड मेटल एंड मेटालिक ornaments, terracotta art including ornaments as well as toys. ठीक है? terracotta ornaments and toys, painted pottery, कुछ रह गया? I think most of the things we have covered. तो miniaturized forms में मिलेगा, right? All these were part of the practical lived experience. While these forms were standardized, तो यानी कि आपको almost हर हरप्पन साइट से ये सारे के सारे आर्ट फॉर्म्स मिल जाएंगे, उनके representations मिल जाएंगे, but expression was regionally diverse. ठीक है? तो expression में there is not going to be standardization. And what was the reason for that? हरप्पन आर्ट का जो एस्थेटिक सेंस है, did it flow from the top to the bottom or from the bottom upwards? From the bottom upwards, bottom up approach of cultural diffusion, assimilation हो रहा था. That is why आर्ट फॉर्म्स में भी इस तरह का क्वालिटी हमको देखने के लिए मिलता है. ठीक है? फर्दर वो बोलता है कि उतने सुंदर आर्टिफैक्ट्स इंडिया में नहीं मिलते हैं जितने एंशिएंट ग्रीस में, इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में मिल रहे थे. ठीक है? तो अब बताओ सुंदरता का बेसिस क्या है? Is beauty an objective thing or is it subjective? Subjective. शेक्सपियर क्या बोलता है? ब्यूटी लाइज इन दी आई ऑफ द बिहोल्डर. जो मुझे सुंदर लग रहा है हो सकता है आपको भद्दा लगे. ठीक है? तो जनरल असर्शंस कि एक सेंस ऑफ आर्ट भद्दा है एंड द अदर इज सुपीरियर without any scientific analysis, that is that called for? No, that is uncalled for. Further,
Marshall. uh, Alleged that Harappan art lacked the beauty and grace of other civilizational or other civilizations art. ठीक है. However, beauty is subjective and generalizations cannot be made. ठीक है. So he was comparing Indian art against Western art forms. And Western art forms में beauty के standards क्या होते हैं, उसके parameters क्या हैं? Naturalism, dynamism और sense of proportionality, accuracy, etc. These are the things. Marshall based his interpretation on Western standards of art. Namely, क्या क्या? Naturalism, dynamism and proportionality. बेसिक आइडिया इज देखने में खूबसूरत लगना चाहिए. ठीक है. इंडियन आर्ट ऑन द अदर हैंड, उसका फोकस किसके ऊपर होता है? इज इट ऑन दीज थिंग्स और इज इट ऑन एब्स्ट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड ईथोस, और सॉरी पैथोस, उसके ऊपर होता है? तो आर्ट कन्वेज अ डीपर मीनिंग. आर्ट इज symbolic in nature, associated with other stories or legends. Art should evoke a particular type of feeling in the viewer. ठीक है. तो उसको कितना इफेक्टिवली वो आर्ट फॉर्म कन्वे कर पा रहा है, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन ब्यूटी इन द आर्टिस्टिक सेंस. ठीक है. नॉट एनाटॉमिकल एक्यूरेसी और प्रोपोर्शनैलिटी एटसेट्रा. ठीक है. इंडियन आर्ट on the other hand is unique for its narrative and symbolic quality. Naturalistic and accurate representation are not as important as abstraction,
pathos and uh, narration. आर्ट इंडिया में प्राइमरली एक स्टोरी टेलिंग टूल है, ठीक है, नॉट सो इन दी वेस्ट। एंड मार्शल इंडियन आर्ट को किस स्टैंडर्ड्स के ऊपर जज कर रहा है? वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो यूरोसेंट्रिक व्यू हो गया ना ऑफ हरप्पन आर्ट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ऑल दैट रिलायबल, ठीक है। फर्दर इसने बोल तो दिया कि हरप्पन का आर्ट उतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना हमारा आर्ट है, बिकॉज इट लैक्स द नेसेसरी नेचुरलिज्म, डायनामिज्म एंड प्रोपोर्शनैलिटी। बट इज दिस असर्शन एक्चुअली ट्रू? वो प्राइमरली किसके ऊपर फोकस कर रहा है? स्टोन बस्ट ऑफ अ बियर्डेड प्रीस्ट, डांसिंग नटराज, राइट, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, या ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के ऊपर फोकस कर रहा है। व्हाट इज ही नॉट फोकसिंग ऑन? On other artifacts such as painted pottery, seals, which reflect what? A very acute understanding of proportionality, aesthetic spacing and presentation, of dynamism, understanding of movement, fluency, etc. So all these characteristics are also located in Harappan art. Okay? It is just that he did not want to consider all these artifacts as true art. उसको लगा असली आर्ट वही वाला है जो इजिली विजिबल हो। अगर मिनिएचर आर्ट भी है तो वो हेवीली स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए और उसके ये क्वालिटी होने चाहिए। लेकिन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आर्ट थे उसने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। फर्दर हड़प्पन आर्ट फॉर्म्स such as seals, painted pots, jewelry, toys, etc. reveal a sophisticated understanding of artistic spacing and placement, anatomy, ठीक है, तो बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, बायोनिक फॉर्म्स, इवन प्लांट फॉर्म्स, ठीक है, anatomy, movement and proportionality. Further, these art forms produced at massive scale, यानी कि मास प्रोड्यूस हो रहे थे, क्या दिखता है हमें? Was even one hair out of place in a single of these specimens, or were each of them carefully executed? They were extremely carefully executed with extreme precision, ठीक है। तो आर्टिस्टिक एग्जीक्यूशन में भी व्हाट डू वी फाइंड? हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड रिफाइनमेंट, ठीक है। फर्दर the
artistic execution of these mass produced art forms exhibited extreme precision and refinement. What does this demonstrate? A careless attitude towards aesthetics or a deliberate obsession with aesthetics, obsession with beauty? ठीक है, तो this reveals the Harappan obsession with aesthetics or beauty rather than what? Absence of a sense of artistry. फर्दर जॉन मार्शल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियन अचीवमेंट को मिनिमाइज करना, डिमिनिश करना, सो दैट इन कॉन्ट्रास्ट ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई कर पाए, राइट? तो बताओ, इज ही गोइंग टू कैरी आउट एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ हरप्पन आर्ट, या फिर इज ही गोइंग टू राइट अ मोटिवेटेड हिस्ट्री ऑफ हरप्पन आर्ट? मोटिवेटेड हिस्ट्री, रोमला थापर इसको क्या बोलती हैं? कि कलोनियल गेज इन्होंने डाला एंड कलोनियल पर्पस के लिए हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन किया है, ठीक है? फर्दर और लास्टली, मार्शल was not an objective historian or objective observer, neutral observer. He sought to diminish Indian achievements to legitimize colonial rule. And thus, इसके बेसिस पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? Is it correct to say that Harappans lacked a sense of art? No. Harappans possessed a highly refined and educated artistic sense. It is just that it was different from the Western artistic sense. Doesn't mean it was any less than. In fact, in many ways it was superior to the Western artistic sense. Okay? So conclusion, Harappans possessed a refined artistic sense. Every aspect of Harappan life was infused with artistry.
The Harappan art form was distinct from Western art. This does not mean that it was inferior. In many ways, it was far superior. ठीक है? Take down a question. यूपीएससी ने शायद लास्ट ईयर ही पूछा था आर्ट के ऊपर, हड़प्पन आर्ट के ऊपर. डज एनीवन रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ दैट क्वेश्चन? देखता हूँ. The Harappans were not an artistic people. Comment, huh? So, the Harappans were not an artistic people. Comment. कितने मार्क्स का था? 15 मार्कर. This is also for practice. Secondly, identify the chief characteristics of Harappan art. Also in 15 marks. तो बताओ, based on our discussion, can you identify some of the important characteristics of Harappan art? First of all, absence of royal art or absence of monumental art. ये देखने के लिए मिलेगा. Then art as a public thing. तो popular control over art. Artistic expression in miniature practical forms in association with the everyday context. ठीक है? तो एक्सप्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? मिनिएचर फॉर्म्स, expression in association with practical utility, and the aesthetic beautification of items of daily use. ठीक है? और बताओ,
Is the Harappan artistic sense going to be standardized and uniform, or is it going to exhibit diversity within overall uniformity? Diversity within uniformity, or diversity of styles and, sorry, uh, diversity of expressions, of expression, and uniformity of styles और यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइप्स, ये देखने के लिए मिलेगा. देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर्ट का या फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टाइल्स का मैकेनिज्म, टॉप डाउन आर्टिस्टिक इम्पोजिशन और बॉटम अप आर्टिस्टिक असिमिलेशन. बॉटम अप आर्टिस्टिक असिमिलेशन. तो based on uniformity of styles based on bottom up artistic integration. इतना समझ में आया है? और बताओ, एनी other characteristics that you can think of? हम्म. और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अरे भाई, इंडियन आर्ट किसके ऊपर फोकस करता है? एब्स्ट्रैक्शन, पैथोस एंड नरेशन, है ना? तो हड़प्पन आर्ट के भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट एट द सेम टाइम इट आल्सो एग्जिबिट्स आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट थ्रू. अरे वेस्टर्न आर्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नेचुरलिज्म, डायनेमिज्म एंड प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, तो हड़प्पन हैड मास्टरी ओवर बोथ डोमेन्स. ठीक है, तो हड़प्पन आर्ट was simultaneously और हड़प्पन आर्ट simultaneously exhibited refinement in abstraction, pathos and narration. While exhibiting grace through, or I should not say grace here, grace तो इससे आता है, right? Exhibiting beauty or externalized beauty through naturalism, dynamism and proportionality.
तो ये हो गए essential characteristics. Will you be able to identify relevant examples and cite them over here? Will you be able to elaborate upon each of these points? हो जाएगा? तो try to write these answers on your own. तो आज कितने questions दिए हैं? 4 questions दिए हैं. Submission के लिए clear है कौन सा वाला है? Write the answer, submit it before tomorrow evening, and कल शाम तक जो आपके इवेल्युएटेड आंसर्स हैं वो आपको मिल जाने चाहिए. तो 24 आवर्स का टर्न अराउंड टाइम है. विद इन 24 आवर्स ऑफ द फाइनल सबमिशन डेडलाइन ऑल द इवेल्युएटेड आंसर्स यू विल बी गेटिंग बैक. ठीक है. देन फिर उसके बाद एक बार वंस यू एनालाइज इट, अगर कोई डाउट्स आते हैं तो यू, इफ यू आर ऑफलाइन स्टूडेंट, आफ्टर क्लास यू कैन कम टू मी, और ऑनलाइन स्टूडेंट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो. बट ये नहीं कि आपका इवैल्यूएशन हो चुका है, कॉपी मिल गई है, वापस वहां पे अपलोड कर दिया. सर प्लीज गिव सम रिमार्क्स. पॉइंटेड क्वेरीज चाहिए कि सर अगर ये मुझे एडवाइस मिला हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पे चेंज करना है, व्हाट दी एडवाइस इज ऑल अबाउट. अगर उस तरह का कोई क्वेरी है तो पूछना. ये नहीं कि वहां पे चिपका दिया कि हाँ एक बार इन्होंने इवैल्यूएशन कर दिया है, एक बार तुम भी इवैल्यूएशन कर दो. बिकॉज सी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, करने को मैं कर देता लेकिन टाइम नहीं है, स्पेशली इस समय टाइम नहीं है. मेंस भी सर पे है तो उसके लिए ज्यादातर टाइम मुझे देना पड़ रहा है. ठीक है. हाउएवर इतना क्लियर है. नाउ जो उसमें दो अदर टॉपिक्स बचे हुए थे, जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ आर्ट, फिजिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर, टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ आर्ट, वो खुद पढ़ लो. ठीक है. नेक्स्ट टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डील विद अदर क्वेश्चन सच एज Harappan polity, decline, nature of decline, change and continuity, etc. तो hopefully tomorrow we'll be getting through the remainder of the topic, and अगले वीक से फिर नया टॉपिक शुरू कर देंगे, कैलकोलिथिक एज, मेगालिथिक एज, एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक ये स्टोन एज वाला या फिर प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री पूरा खत्म करके we'll be stepping into the historical age, Vedic civilization after that. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे यार ये डिस्कनेक्ट हो गया. अच्छा नहीं है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पैथोस इन आर्ट, मतलब पैथोस का मतलब टू बी एबल टू कन्वे अ पर्टिकुलर फीलिंग. ठीक है. दैट इज पैथोस. या पार्थेनॉन का. अच्छा, can we say that Harappans exported their art, which led to artisan guilds, so the art produced and artistic style was based on demand from other civilizations like Mesopotamia, Elam, etc. Yes, that can be said. इनफैक्ट वो जो हमने यूनिफॉर्मिटी इन दी हरप्पन सिविलाइजेशन एक बार डिस्कस किया था ना, कि उसके क्राफ्ट बेस्ड ट्रेडिशंस, क्राफ्ट बेस्ड लिंक्स हैं, कि एज आर्टिजनल गिल्ड्स इमर्ज दे बिकेम डोमिनेंट एंड they began to start shaping the material traditions of the Harappan people. तो उसके साथ कल्चर, सेंस ऑफ आर्टिस्ट्री, प्रोडक्शन नॉर्म्स एक्सेट्रा वो सब भी सेट होते हैं. एंड यस दे वर ट्रेडिंग विद फार अवे सिविलाइजेशंस. तो जो उनका आर्टिस्टिक सेंस है उसका भी इम्प्रिंट यहाँ पे दिखता होगा. बट वंस अगेन कैन वी से फॉर सर्टेन, नहीं बोल सकते हैं, केवल क्या से लगा सकते हैं. ठीक है. ऑल वी कैन डू इज स्पेक्युलेट. चलिए ठीक है देन, थैंक यू फॉर योर टाइम.